Here, I would like to welcome Sir Michael Baba, who is a renowned worldwide reformer and was advisor to ex-Prime Minister Tony Blair. And we thank him for his time that he is sharing with us. And Sir Michael Baba, we would like to start off the proceedings right away. And I apologize for the fact that the proceedings would be in Urdu, but if there are any questions, clarifications, I myself or Dr. Sania Nishtar can elaborate or clarify or translate. So once again, welcome Sir Michael Baba. I want to start by saying I'm a long-standing friend of Pakistan. I've visited the country more than 50 times. I've been in the south, in the rural areas. I've been in Lahore, I've been in Karachi, Islamabad, Abbottabad. I've been all over the country. I've visited schools, I've visited health centres, and so on. It's a country very dear to my heart, so I'm very proud and honoured to join you this morning. The report we're publishing today, which is available to all of those of you that attend the press conference and will be made public, is about the EZAZ programme. I think you're familiar with the EZAZ programme, but before I make my comments, I thought I'd just give you an outline of the programme, and clearly Dr. Sania can give you all the detail you could possibly want. The EZAZ programme is a multi-dimensional anti-poverty programme that has the explicit support of the Prime Minister himself. He himself says, and you'll see it on the front page of the report, that the EZAZ programme is a top priority for me personally and for the whole government. So that's what the Prime Minister thinks about this programme. It's a top priority for him and his government, and he's his special assistant, Dr. Sania Nishtar, to oversee that programme. The programme has, I won't go into a lot of detail, but just to give you an idea, it has 4 pillars. One dealing with elite capture and governance. A second one providing a safety net for everybody in Pakistan, regardless of their background. The third one is about human capital development, health and education. And the fourth one is about jobs and livelihoods. And the idea of the programme is that if you do all those 4 things, you don't just address the symptoms of poverty, you address the causes of poverty. And the programme is in that sense comprehensive and ambitious. And in order to oversee the programme, the Prime Minister and the bureaucracy in Islamabad has created a new ministry called PASS, Poverty Alleviation and Social Security, with 2 excellent secretaries there working with Dr. Sania to ensure that this programme is successful. And because of the breadth of the programme, it involves many of the other ministries in the country, and indeed it involves not just the federal government, but the provincial governments. So these are the words of background so you understand the scale and ambition of the EZAZ programme. I want to now say 4 things about what we saw, what we think about that programme now we've had time to examine it and to prepare this report. The first thing to say is that it's had a very strong first year or so. It's got off to a really good start. And when you imagine that this was established before the COVID-19 crisis, you realise that that is an impressive achievement to have a successful year through such a challenging time in Pakistan and indeed everywhere across the world. What we've seen in that year or so of the establishment of EZAZ is a shift from the politics of patronage, using politics to reward your friends, to the politics of performance, using politics to deliver for the people, measurable results. And that's a very, very important shift. And I congratulate those involved in the EZAZ programme and Dr. Sania herself for bringing about that shift. And that's the title we've chosen for our report. Let me give an example, because this has been the most urgent priority given the year that we've been living through around the world.
I want to give the example of the Azaz Emergency Cash Programme, but remember it's one part of this wider multi-dimensional programme. The Azaz Emergency Cash Programme is a very large programme delivering cash transfers to 15 million people. And if you take the fact that the average family size in Pakistan is 5 or 6, you're talking about up to 90 million direct or indirect beneficiaries from this programme. And what Dr. Sanya and her colleagues in the past ministry have done is deliver that cash in a way that is rapid, is efficient, is digital, and has massively reduced any risks of corruption. And they've done that by doing it digitally with the best technology, by constantly reviewing it. They've done that by checking the national ID and the bank account of every single individual. And there's been an auditable process, so that's all there for the record, it's auditable. This is very, very impressive to get that amount of cash to that many people that fast and that effectively in these very difficult circumstances that we've been living through. By the way, if you, for some reason, haven't got a bank account, you can opt in, but again, there are rigorous checks on identity. They also, in setting that program up, removed 800,000, just over 800,000 people from the previous beneficiaries of the BISC program. They removed beneficiaries, for example, where the spouse had travelled abroad, or the person himself or herself had travelled abroad. They removed beneficiaries where the spouse was a government employee. And in that way, they took 800,000 people off the original list to make sure that the money was actually going to people that it was intended for, to alleviate poverty and not to benefit people who had no right to that money. Sir Michael Barber is a great friend of Pakistan. He knows Pakistan very well. He's been deeply involved in assessing various initiatives. He's been advising governments. He's travelled in Pakistan far and wide. He knows the system extremely well. And I want to thank him for the time and attention he's given to Asas. I want to thank him for making Asas a part of his research. And I want to thank him for the encouragement and for the very valuable recommendations that he has given us. Michael, I'm going to switch to Urdu and we will make the proceedings of this conference, of this press conference, available to you, and will direct and translate any questions that we have. But let me begin. मैं इब्तिदा करना चाहती हूँ. सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब का कि वो आज ख़ुद तशरीफ़ लाए, उनकी सरबराही में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई. बहुत से सीनियर मेंबरान आज यहाँ मौजूद हैं. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाला. सर माइकल बार्बर हुकूमती अमूर में एक वर्ल्ड अथॉरिटी माने जाते हैं. ख़ास तौर पे हुकूमतों की जो डिलीवरी कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो कारकर्दगी से मुतल्लिक जो साइंस है, जिसको डिलीवरोलॉजी कहते हैं, ये लफ्ज़ इन्होंने ईजाद किया. इस पे किताबें लिखी, मरासले लिखे. हाउ टू रन अ गवर्नमेंट जो इनकी किताब है, पेंगुइन प्रेस की, बहुत ही मशहूर किताब है. ये बरतानिया में 5 साल तक यूके हुकूमत की डिलीवरी यूनिट के सरबराह रहे. बहुत से मुल्कों के सरबराहान को की ये रहनुमाई करते हैं और बहुत सी इनकी पब्लिकेशंस हैं. तो इनकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है. इनके मशवरे भी हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की है उसमें एहसास प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए भी बहुत से मशवरे शामिल हैं. जैसे कि आप सब जानते हैं, एहसास प्रोग्राम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है और उसके दायरा कार में जो भी प्रोग्राम चलते हैं, एहसास किफ़ालत है, एहसास नशोनुमा है, तालीमी वज़ाइफ से मुतल्लिक प्रोग्राम हैं, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, एहसास किफ़ालत, एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, एहसास आमदन का प्रोग्राम है, एहसास वन विंडो है, एहसास लंगर का प्रोग्राम है. ये तमाम, और एहसास एमरजेंसी कैश जिसका आपने अभी ज़िक्र भी सुना, ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, इनका मकसद सिर्फ़ एक ही है कि हक़दारों के हाथ में उनका हक़ पहुँचे. ये हुकूमत पाकिस्तान के कंधों पे एक बहुत ही अहम ज़िम्मेवारी है
और इस ज़िम्मेवारी को निभाने के लिए हमने एक निज़ाम बनाने की कोशिश पिछले 1.5 साल से जारी है। मकसद ये है कि ये निज़ाम करप्शन से पाक हो, ये निज़ाम गैर सियासी बुनियादों पे चले, एक मुनज़्ज़म अंदाज से चले और एक शफाफियत को सामने मलहूज़ रखते हुए ये निज़ाम चले। हम पिछले 1.5 साल से दिन रात इस निज़ाम की तश्कील के लिए मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्रामों को भी रोल आउट कर रहे हैं, उनको पाए तकमील तक भी पहुंचा रहे हैं, स्केल अप भी कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल और कठिन काम है और अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। जो भी इब्तदाई कामयाबियाँ अल्लाह की मेहरबानी से हमारी हुकूमत को नसीब हुई हैं, मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ कि उसमें वज़ीर आज़म की डायरेक्ट सरबराही का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो भी मुश्किल फ़ैसले हम करते हैं, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस हम करते हैं, जो भी गैर सियासी बुनियादों पे प्रोग्राम को चलाने के लिए जो भी फ़ैसले करने होते हैं, वो उनकी डायरेक्ट सपोर्ट के बगैर बहुत ही मुश्किल हो जाते। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने डायरेक्टली इस प्रोग्राम की हमारी रहनुमाई भी की, सरबराही भी की और मुश्किल फ़ैसले करने में जो भी हमें सपोर्ट दरकार थी वो भी हमारे पीछे खड़े रहे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में पूरी हुकूमत की नेक नियति शामिल है और सबसे ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरी टीम की मेहनत, मेरे सेक्रेटरीज़ की नेक नियति भी इसमें सब शामिल है। ये सफ़र अभी इब्तिदा हुई है, ये सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अभी हमने आगे बहुत सा काम करना है निज़ाम को ठीक करने के हवाले से भी और नए प्रोग्रामों की तश्कील और जो अभी प्रोग्राम्स हैं उनकी स्केल अप और उनकी क्वालिटी बेहतर करने से भी मुतल्लिक अभी बहुत काम बाकी है। तो आप सबका साथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाना, लोगों को इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करने की तरीक़ेकार से आगाही करने में आप लोगों का बहुत ही अहम किरदार है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि आप हमारा उसमें साथ दें।